Hello friends, welcome to Kushi Tricking English class. Today we are reading about how to speak English fluently, speedily, fastly. Practice how to speak English, advanced and basic sentences. कुछ basic sentence भी होंगे, कुछ advanced भी होंगे. And today's motivation line: first desire then deserve. पहले किसी चीज की desire करो, फिर उसको deserve करो. If you desire it, you will deserve it. अगर तुम किसी चीज की इच्छा रखते हो तो आप वो चीज पाने के योग्य भी बन जाओगे, आप उस चीज को पाने के लायक बन जाओगे. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे बार बार ये सेंटेंस, जैसे आज 50-60 सेंटेंस है, ये इनसे आपको 150 बना के आपको पहले ही जो 5-6 क्लास में आपने देखी है उनमें बेसिक बताया कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस या इंट्रोगेटिव या टेंस के मॉडल्स के, उन सब का मिक्स से रहा है. कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे सिचुएशन आएगी, आपको कैसे बात करनी है. तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. लेट्स सी, today's session is very important for you, and this class is a life changing class for you, a turning point for you. Because suppose that if you want to speak English, then you will have to learn it, and you will have to get it, you will have to speak it. There is a language. Language means language. And how it possible? It can be possible for you like that you can't speak English and you can't speak Hindi. Suppose that you are indicating someone. You are indicating someone. करते हैं ना ऐसे? Yes, no, yes, come here, go there. इशारों में तो बात करते हैं तो वो भी अपने माइंड में पहले उसका फील आता है, आइडिया आता है, थॉट आता है. After that we speak it. Just like that, be cool, be relaxed, and don't pressure on your mind. Take it easy, don't take it hard, and without any pressure, without wasting time. Because if you think in Hindi in your mind, so it will take time. Because you first translate into English from Hindi, it will take your time. And opposite that, you will think in English in your mind, then you will speak in English. There is no wasting of time. So without wasting time, you will speak in English, you will speak in English again and again, and you think in English. There is no formula, there is no trick, there is no short trick about speaking English. Many people and most of teachers, most of people say that English is very easy language, very hard language, and this is international language. It will take 3 months, it will take 3 years, and it will take atmosphere. And a simple boy or uneducated man or a villager can't speak it. But I say you can do it and you will speak it. You will speak it. तुम बोलोगे इसको. Because there is a confidence in you. Put out that confidence. Put out that confidence. And you will have to do it. Without your confidence, you cannot speak and you can't speak any language of the world. Confidence is must in speaking any language. So first put out your confidence and don't take pressure and don't be fear. Just put out the fear and just put out the confidence. Let's see. Let's speak English with me on the board and practice. First sentence. What are you thinking? क्या सोच रहे हो? Sir, I am thinking
about speaking English. I am thinking about spoken English. Just speak it. Why are you thinking that? Don't think. Just speak. If you are thinking that there is problem, how can I speak? How can it possible? Everything is possible. Impossible. The word itself says that I am possible. What are you thinking? क्या सोच रहे हो? I am thinking about my study. मैं मेरी पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ. I am thinking about English. I am thinking about Hindi. I am thinking about my father. I am thinking about my mother, my friend. Where is your attention? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? My attention is at blackboard. My attention is at you. I am warning you. मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ. Pay my account. मेरे अकाउंट्स चुकाओ, जमा कराओ पैसे. हाउ इज हिज कंडीशन नाउ? किसी से पूछ लो आप पेशेंट से कि हाउ इज कंडीशन, हाउ इज हिज कंडीशन नाउ, उसकी कंडीशन कैसी है? हिज कंडीशन इज इम्प्रूविंग नाउ, या ही इज फीलिंग बेटर नाउ. आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. आई विल स्टैंड बाय यू. मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. आई एम गेटिंग लेट. मैं लेट हो रहा हूँ. हु गेव यू माई नंबर? आपको मेरे नंबर किसने दिए? जैसे कि योर ब्रदर गेव मी योर नंबर, राम गेव मी योर नंबर, सीता गेव मी योर नंबर, योर फ्रेंड गेव मी योर नंबर, योर फादर गेव मी योर नंबर. व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? आई थिंक सो. मैं ऐसा सोचता हूँ. आई थिंक डेट. अब जो सोचते हो कोई लंबी बात या लंबी स्टोरी, कोई लंबा सेंटेंस. आई थिंक डेट यू आर my friend and you are doing bad, you are doing good and you are feeling better, X, जो भी etc. I am good at my work. मैं मेरे काम में अच्छा हूँ. He is not reliable. वो विश्वसनीय नहीं, भरोसेमंद नहीं है. I am coming to you. मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ. I don't know. मैं नहीं जानता हूँ. या I know. मैं जानता हूँ. I know you very well. मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ. या I don't know about you. मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता. I don't know this address. I don't know this place. I don't know this story. Anything. What is my fault in it? इसमें मेरी क्या गलती है? It's your fault in it. आप बताओ कि this is your fault and it's your fault. That is your fault in it. That is your fault in it. ओके, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है. बेस्ट ऑफ लक.